Good morning. Good morning, sir. Good morning, Teejraj. Good morning, Akshay. Good morning, Radhika. Akshay, Radhika are on the YouTube and Teejraj is on Google Meet. Welcome. चलिए. So आज का काम शुरू करते हैं. आज की क्लास शुरू करते हैं. प्रियांशु घोष is also there. I believe हमें 1-2 मिनट रुक जाना चाहिए जब तक सारे के सारे आ जाते हैं. Good morning, sir. Good morning. आज से आपको अपने असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे. मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के असाइनमेंट्स बना दिए हैं. एंड अब आपको देखते हैं क्या क्या मिलता है. लेट्स सी. चलिए. सो आज का काम शुरू करते हैं. किसी ने कल की क्लास तक का कुछ पूछना है क्या? अक्षय, राधिका, मायुक. मायुक बेटा, कल आप क्लास में नहीं आए थे. आई न्यू यू वर इन क्लास. आप दूसरी क्लास में थे. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अक्षय. और हाँ, गूगल मीट के अगर ज्वाइन करना है तो आपने गूगल मीट का सेशन यहाँ पर, आई बिलीव यहाँ पर उसका लिंक है ना? ओके. चलिए, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं. हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स आ गए हैं. तीर्थराज, प्रियांशु, मायुक, अक्षय, राधिका एंड और कौन है? चलिए. अभी कुछ दिनों तक नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, वाईटी से सेशन अटेंड कर लीजिए. एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए, लेट्स बिगिन विद द वर्क. We were talking about autoprotolysis of water and we have to talk about the pH scale today. So let's get along with it. चलो. Let's talk about the autoionization or autoprotolysis of water. आखिरकार होता क्या है autoprotolysis और autoionization क्या होता है? तो get along with it. Autoionization क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था. What exactly is the meaning of autoionization? Autoionization is when the species ionizes by itself. उसे autoionization कहते हैं. Now when we talk about the autoionization of water, मैंने पिछली क्लास में, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि what exactly is autoionization of water. Let's get along a bit in detail. ठीक है. हमारे पास है H2O. Okay. Now we can consider it reacting with another H2O. We can, because actually it is two molecules which are interacting with each other. And the equilibrium is established and it gives us H3O plus OH minus. One of the H2O molecule behaves as an acid, another H2O molecule behaves as a base, and they both join together to form H3O plus and OH minus. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है. वी कैन राइट अनदर इक्वेशन ऑल्सो. रादर देन राइटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वी कैन सिंपली राइट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड द इक्विलिब्रियम कैन बी एडजस्टेड एज H plus aqueous plus OH minus aqueous. So this is how it can be written. Somebody said me कि सर आप लिखकर क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो सब कुछ भाई लिखकर भी पढ़ा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम लिखकर भी पढ़ा सकते हैं, बिना लिखे भी पढ़ा सकते हैं. So that's what we have as H2O, H plus OH minus हमारे पास आ जाता है. And now further if we talk about, अब यहां पर left hand side पर हमारे पास एक reactant है. Since we have the left hand side only one reactant, we can use degree of dissociation. ठीक है. और यहां पर rather than being degree of dissociation, it is going to become degree of
आयोनाइजेशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बिकम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वाटर इज अ कोवेलेंट स्पीशी, और यहां पर वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयंस, तो इसलिए हम वी कैन टॉक अबाउट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। So that is what we have as the degree of ionization. Now, once we have talked about the degree of ionization, अब यहाँ पर क्या होगा? 1 minus alpha, which is the degree of ionization. यहाँ पर ये alpha, यहाँ पर ये alpha. This is what we have done in already done in the chemical equilibrium. किसी को कोई confusion है यहाँ तक? No, Anybody has sir. the confusion here? And now here we multiply it by C. Now what is C? C is initial concentration of reactant, जो इस केस में वाटर है। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, एक एक करके अच्छी अच्छी तरीके से धीरे धीरे बता रहा हूं, तो वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो चीज है जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता था। सो आई एम टीचिंग यू एज इफ आई एम टीचिंग माई सेल्फ, एंड आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज, आई डोंट नो, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, बट ठीक ठाक था। ठीक है, तो होपफुली जिस तरीके से मुझे समझ में आया उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बल्कि आपके लिए तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज नो डाउट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये आ गया, तो C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। नाउ दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस स्पीशी। नाउ हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम। नाउ के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो के इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बिकम द concentration of H plus into concentration of OH minus divided by the concentration of H2O. Any kind of problems here? बहुत ध्यान से देख लेना, No, sir. बहुत अच्छी Clear. तरीके से देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अब इसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यहां पर हमारे पास सी अल्फा आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा, फाइन, and that becomes equal to C alpha square upon 1 minus alpha। यहां तक देखो, मैं बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से बोल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो इक्वेशन जो मैंने ये डेरिवेशन किया है ना, दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में एक ही डेरिवेशन और ये है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम में, बस यही है और कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर? तो यहां पर इफ यू टॉक अबाउट दिस नाउ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, दैट इज समवॉट अराउंड 10⁻⁹। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू इज 10⁻⁹। ना ये जो 10⁻⁹ है, दैट इज 1 इन अ बिलियन, 1 इन अ बिलियन। ठीक है, तो अब अगर मैं ये 1 माइनस में से अल्फा कर देता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 0.999999989 आ जाएंगे मेरे पास। इज इट वर्थ? कितना फर्क पड़ जाएगा? 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0.0001% का फर्क पड़ेगा। आर वी बॉदर्ड अबाउट इट? नहीं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सो व्हाट वी डू इज, इस 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख देते हैं। क्लियर? रीजन समझ में आ गया कि 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 क्यों लिखा है? न्यूमरेटर में मैं अल्फा स्क्वायर को 0 नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर उसका कंपैरिजन नहीं है। तो डिनोमिनेटर में लेकिन मैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इग्नोर कर सकता हूं। तो हमारे पास ये बन जाता है, इक्वल टू ही लिख दो, अप्रोक्सीमेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सी अल्फा स्क्वायर। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन विद व्हाई आई राइट सी अल्फा स्क्वायर? 1 माइनस अल्फा क्यों नहीं किया? देखो हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, 4 स्टूडेंट हमारे पास यूट्यूब पर हैं, 3 स्टूडेंट हमारे पास गूगल मीट पर, 2 स्टूडेंट इनफैक्ट। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट हमारे पास गूगल मीट पर हैं, 4 स्टूडेंट हमारे पास यूट्यूब पर हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से बोल दो। वेलकम अनन्या। तो
अनन्या ये पार्ट एक बार फटाफट देख लो, मैंने क्या बताया है। मैंने बोला है, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है। H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो हमने दो H2O की जगह एक H2O लिख दिया और हमने लिख दिया H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है। अब यहां पर सिंस देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर क्योंकि ये कोवेलेंट स्पीशी है, तो इट इज बेटर टू कॉल इट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसको हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 माइनस अल्फा सी अल्फा अल्फा लिखा, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर हमारे पास सीधा सीधा आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमारे पास आ गया H प्लस प्लस O इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा, इट बिकम सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Now alpha की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power -9 है, which is negligible in comparison to 1। तो हमने डिनोमिनेटर को 1 लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर। ओके, तो ये हमने एक तरह से समरी भी कर दी और आपको बता भी दिया ये क्या चीज हो रही है। ठीक है, अनूप सर की क्लास खत्म करके अनूप सर की क्लास में आ गए, दैट्स ग्रेट। चलो अच्छी बात है, अनूप सर ने आज क्लास जल्दी खत्म कर दी। मुझे लगा था उनकी क्लास 10 बजे शुरू होनी थी। चलिए, ओके, so that's what we have talked about the degree of dissociation. Okay, now having talked about that, that's great Ananya, 1.5 hours की उन्होंने क्लास ले ली, बहुत बढ़िया बात है। चलो, आपको ज्यादा देखो ओवरबर्डन मत हो जाना केमिस्ट्री से। नाउ अब हमारे पास आ गया K equilibrium is equal to C alpha square. Now alpha क्या है? Alpha is degree of ionization। ठीक है ना, अगर मैं चाहूं तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। Now, alpha would be equal to under root of K equilibrium divided by C। कोई कंफ्यूजन किसी को? Alpha is going to be equal to K equilibrium divided by C। Okay, यहां तक कोई प्रॉब्लम? So, No, sir. here we have a little bit theory about it. Water in itself ionizes to a very small extent. In this process, one water molecule becomes acid and releases H plus, while the other water molecule is a base and accepts OH H plus। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास आ गया H2O प्लस H2O gives H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, we can even have just one water molecule undergoing dissociation or ionization। तो हम लिख सकते हैं H2O in equilibrium with H plus plus OH minus। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है, दैट इज व्हाई वी कैन यूज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ, इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन वी कैन यूज वर्ड आयोनाइजेशन। ओके, तो अब यहां पर हमने लिख दिया 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आ गया C1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी K इंटू H प्लस OH माइनस अपॉन H2O, एंड दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा को हम 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, इनएडमिसिबल बना देते हैं, एंड वी गेट K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा की अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो अल्फा इज गोइंग टू बी अंडर रूट K बाय C। ठीक है, अब we can talk about the concentration of H plus। ठीक है, we can talk about the concentration of H plus। अब अगर हम बात करते हैं concentration of H plus की, तो concentration of H plus is equal to C alpha। ठीक है, अच्छा, अल्फा की वैल्यू इज अंडर रूट K बाय C, तो concentration of H plus would turn out to be C into under root K by C। अगर मैं C को अंदर लेकर जाता हूं एक इसके, तो दैट इज गोइंग टू बिकम अंडर रूट K बाय C मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वेयर। देखो, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज नीट के स्टूडेंट्स कहां पर कंफ्यूज हो जाएं कुछ पता नहीं होता, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग ईच एंड एवरी कैलकुलेशन थॉरोली। तो K बाय C इंटू सी स्क्वायर आ गया, सो दिस बिकम्स अंडर रूट K C। कोई प्रॉब्लम किसी को?
ठीक है? No, sir. No, sir. ओके, अब कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर हमारे पास आ गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। अब इसी तरीके से अगर हम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो OH minus concentration also is equal to C alpha, and since it is equal to C alpha, this also is going to be equal to Kc. वाटर है, दोनों H plus और OH minus की concentration actually बराबर है, क्योंकि water molecule, each molecule is dissociating to give H plus and OH minus. The concentration of H plus and OH minus are equal. Now, there are certain points that you need to understand. Very, very simple points. Water is a pure liquid. Pure liquid. Okay? It is also the solvent. The concentration of water is huge in comparison to H plus and OH minus. Its concentration is very high and the dissociation is extremely small. मतलब कि अल्फा की वैल्यू इन कंपैरिजन टू वन कुछ नहीं है, वाटर के कंसंट्रेशन के आगे तो कुछ भी नहीं है. क्लियर? इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. ठीक है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के. हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के. हमारे पास के की वैल्यू है के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2O. ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है. अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस H2O को यहां ले जाते हैं एंड वी मेक इट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. अब इंपॉर्टेंट बात ये कि K एक कांस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है. H2O का कंसंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है. द कंसंट्रेशन ऑफ H2O आल्सो इज अ कांस्टेंट. And if the concentration of H2O also is a constant, then in that case, K into H2O is a constant. Okay. Now, what is this constant? Now, this constant is the product of concentration of ions formed by autoionization of water. ठीक है, product of the concentration of ions formed by autoionization of water. Clear? जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल देते हैं. नाउ दिस product of the concentration of ions formed by autoionization of water is termed as ionic product of water. Anyone has any kind of confusions here? And this ionic product of water is written Yes, as sir. Kw. बोलो क्या पूछना है? Deethraj, anything you want to ask? नहीं sir, clear sir. चलो. So this ionic, this word is written as Kw. Okay. Now what we get is Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. This Kw again is a constant and its value is approximately, or approximately nahi, its value is equal to 10 raised to power minus 14 at 298 Kelvin 1 bar. Now 10 raised to power minus 14 is experimentally determined value. और मजेदार बात बताऊं आपको, these values are determined by conductometric values. कंडक्शन के थ्रू हम यूज करते हैं ना, कंडक्शन के थ्रू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मेजर कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो कंडक्शन की मेजरमेंट है, उनसे ये Kw और आयनिक, जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है ना, वो सारी कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट से डिटरमाइन होते हैं. तो यहां पर हम बड़े आराम से ये डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है, okay. So that's what we have as the experimentally determined value, the ionic product
of water, Kw. Now, so equilibrium constant is K is equal to H plus into OH minus by H2O, multiplying the equilibrium constant with the concentration of water, we get H plus into OH minus, and this is what we have as Kw, the ionic product of water. It is the product of the concentration of ions formed due to autoionization of water and is termed as ionic product of water. Now, what is ionic product of water? Now, remember, ionic product of water is an equilibrium constant. Ionic product of water is an equilibrium constant. And since it's an equilibrium constant, it's all characteristic are of equilibrium constant. इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हैं. फाइन. एंड व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है बिल्कुल वही है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, मतलब कि नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन. क्वाइट ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होता. ओके. फर्दर, it is affected by temperature. Now it increases with temperature क्योंकि reaction is endothermic. The reaction is endothermic, and since the reaction is endothermic, Kw increases with temperature. Okay. इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है. 298 केल्विन पे अगर मैं 388 केल्विन यानी कि 190 डिग्री 90 डिग्रीज ले लूं या 60 डिग्रीज ले लेता हूं. 90 डिग्रीज अगर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, देन इन दैट केस इट बिकम्स नियर अबाउट 10⁻⁻12. ठीक है. एक बात का ध्यान रखना, पावर जितनी मैग्नीट्यूड में कम होती जाएगी, वैल्यू एक्चुअली बढ़ती जाएगी बिकॉज इट्स अ नेगेटिव पावर. क्लियर? ओके. फर्दर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. देखो, उस प्रेशर पे डिपेंड ना होने के दो रीजन है. पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है. दूसरी बात, यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड्स इन्वॉल्व है. लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर और द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर इंप्योरिटी. कोई भी इंप्योरिटी डाल दो, Kw पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इज दिस क्लियर? सो Kw इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द प्रेशर. अब इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी और बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, नाउ 10⁻⁻14 इज क्वाइट अ स्मॉल क्वांटिटी, हम लॉग ले लेते हैं. ठीक है. We prefer to use log. So what we do is, हमारे पास है Kw is equal to the concentration of H plus into concentration of OH minus. हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं. एंड यहां पर हम सीधा सीधा log to the base 10 ले रहे हैं. We are not bothered about log to the base e. हम कोई नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहे, हम log to the base 10 की बात कर रहे हैं. log to the base 10 की अगर हम बात करते हैं, तो here it becomes log Kw is equal to log of the concentration of H plus log of the concentration of OH minus. ठीक है. अब इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो, एक बात का ध्यान रखना, concentration of H plus is equal to 10⁻⁻7. concentration of OH minus is equal to 10⁻⁻7. Kw is equal to 10⁻⁻14. ये सारी वैल्यूज नेगेटिव है. ओके. टू मेक देम पॉजिटिव हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय -1 to make all values positive. ठीक है. मल्टीप्लाई द सर एंटायर एच इक्वेशन. इक्वल टू क्या लिखे है? हाँ जी. एच प्लस इक्वल टू क्या लिखे है? 10 टू द पावर 10 to the power -7. ओके सर. भाई 10⁻⁻14 है ना दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों इंडिविजुअली तो 10⁻⁻7 हो गए ना. 10⁻⁻14 is equal to 10⁻⁻7 multiplied by 10⁻⁻7. ठीक है. H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर है. टू मेक ऑल द वैल्यूज पॉजिटिव तो हमने कर दिया माइनस लॉग
Kw is equal to minus log concentration of H plus minus log concentration of OH minus. ठीक है? When we talk about this, minus log Kw is positive power of Kw. Minus log Kw is positive power of Kw. ठीक है? क्योंकि log Kw is, let us say, any value. That means क्या है ये? Log क्या होता है? Log is the power of 10. Log is the power of 10. हम इतना लंबा नहीं बोलते केमिस्ट्री में, हम सीधा बोलते हैं पावर ऑफ Kw. ठीक है? Now this becomes positive power of Kw. So minus log concentration of H plus is positive power of concentration of H plus. इस तरीके से minus log OH minus is positive power of OH minus. ठीक है? अब ये जो वर्ड है ना, पॉजिटिव पावर ऑफ, इसे लिख दिया जाता है सीधा सीधा P. पॉजिटिव पावर ऑफ को सीधा सीधा P लिख दिया जाता है. ओके, वी राइट इट एज P. नाउ पॉजिटिव पावर ऑफ Kw को हम लिख देते हैं, पॉजिटिव पावर को लिख दिया P. अब पावर ऑफ बनाना है ना, ऊपर लिख दिया Kw. ठीक है? Kw इज इन पावर, पॉजिटिव पावर ऑफ Kw. इसी तरीके से पॉजिटिव पावर ऑफ H प्लस को लिख दिया P, ऊपर लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. यहां पे लिख दिया पॉजिटिव पावर को P, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. ठीक है? हाँ मायुक, log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y. यस इट इज ट्रू. इसमें पूछना क्या है? तो होता है, ये लॉग का रूल है. तो द प्रोडक्ट्स गेट कन्वर्टेड इनटू एडिशन, subtract and division becomes subtraction. Okay, now so that is what we have as positive power of OH minus. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात. ठीक है? तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? PKW is equal to P of concentration of H plus P of concentration of OH minus. किसी को कोई दिक्कत? Now the problem with chemistry is कि we are not going to write anything which is not required. ठीक है? अगर किसी चीज को लिखने से किसी कंफ्यूजन को दूर करने का ऑप्शन नहीं है, इफ एनीथिंग इज रिटन विच इज नॉट नेसेसरी टू राइट, हम नहीं लिखेंगे. अब एक बार बताओ, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है दैट दिस इज H प्लस? डू आई नीड टू टेल यू दैट दिस इज H प्लस? कुड आई नॉट जस्ट से H? ब्रैकेट लिखना जरूरी है? इज इट नॉट नेसेसरी? इज इट नॉट नोन कि इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? तो जब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं. I'm not just going to write. If it is not required, I'm not going to write. Now, if it is not required, then in that case, I simply write it as PKW is equal to P. I remove the square brackets because I don't need to tell you it is concentration. I remove the H plus because I don't need to tell you that it is a proton. If I simply write it as H, that is enough. In the same manner, here, I write it as OH. This is enough. Clear? So this is the equation that I have. Positive power of Kw is equal to positive power of hydrogen plus positive power of हेलो सर. hydroxide. Yes, Tirthraj. सर वो पी टू द पावर एच प्लस नहीं होगा, मतलब आयन? मैंने कहा ना मायुक, मैंने कहा ना तीर्थराज, that is concentration. If I write it H itself, can't you understand it? बोलो, आपको मुश्किल हो रही है क्या समझने में? नहीं सर. बेटा, केमिस्ट्री के अंदर अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तुम्हें पहले से पता है, दैट मीन्स if I know that whatever I'm trying to tell you already know it, I won't tell you.
Chemistry is the subject of lazy people, and lazy people do not do anything unless it is necessary. ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो. Chemistry people will not do anything until unless it is absolute necessary. हर चीज नेग्लेक्ट कर देते, हर चीज उड़ा देते हैं. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में 1 नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? जरूरत नहीं है. ठीक है. कैपिटल्स नहीं लगाते. They do it absolutely small, and by doing it absolutely small, do you know what they achieve? They achieve only one thing. जिसको केमिस्ट्री आती है उसी को समझ में आएगा, वरना किसी को समझ में ही नहीं आएगा. Have you ever thought about it, Teethraj? Whenever you are reading chemistry book, you will find, अरे ये इंफॉर्मेशन लिख देते तो इनका बाप का क्या चला जाता? What exactly would have been there? But नहीं लिखेंगे. Same is happening here. स्क्वायर ब्रैकेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्यों लगाए? H प्लस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों लगाए? हटाओ, जगह बचाओ, प्रिंटिंग इंक बचाओ, और कंफ्यूजिंग बनाओ. और पी लिखने की क्या जरूरत थी? कर दिया. सो नाउ, और एक प्रॉब्लम और हुई. द वेरी फर्स्ट टाइम somebody proposed it, at that time the printing press, जो प्रिंटिंग होती है उसके अंदर, they didn't have the superscript. मतलब कि ये P के ऊपर H लिखना पॉसिबल नहीं था. ठीक है. ये W को नीचे लिखना पॉसिबल नहीं था. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं था वो प्रिंटिंग प्रेस में. ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाला काम जो सिर्फ ये हुआ है इसमें क्या कहते हैं, हमारे कंप्यूटर्स के बाद. वरना सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखना कितना मुश्किल था, खुद सोचो. नॉर्मल टाइपिंग में होता नहीं है. तो द प्रिंटर जिसने वो बुक छापी थी, जिसने वो रिसर्च पेपर छापा था, उसने लिखा पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच. और उस प्रिंटर की गलती की वजह से दिस became the standard equation. And this is the famous pH that you know. The pH scale. वो इसलिए बन गया. So this is pH is negative log of hydronium ion concentration. Okay, you can say pH is positive power of हाइड्रोनियम. अब हाइड्रोनियम बोल लो या हाइड्रोजन बोल लो, आयन कंसंट्रेशन. हाँ भाई, anybody has any kind of question to be asked here? Yes, sir. हाँ अक्षय, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो पहले से कंफ्यूजन में होगा वो और कंफ्यूजन में आ जाएगा, और स्टूडेंट तो बुरी तरह कंफ्यूज होते हैं, और यही रीजन है दैट द स्टूडेंट फाइंड केमिस्ट्री डिफिकल्ट. केमिस्ट्री डिफिकल्ट है नहीं, इसे जानबूझ के जबरदस्ती बनाया गया है. इट्स एब्सोल्युटली इजी है. क्या इसमें कुछ लग रहा है क्या? क्या अबे ये क्या है? आपने पीएचपी रेज टू पावर एच प्लस कंसेंट्रेशन की जगह, या फिर सीधा सीधा माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस लिख दो यार. पी लिखने की जरूरत क्या थी? और माइनस भी क्यों लगा रहे हो? नेगेटिव में आने दो ना. बट नहीं. So this is what we have as the negative power of the positive power of hydronium ion concentration, and that is what we have as the pH. Now these are the numbers which are large, huge, and so to do away with these, we used to prefer log. Log is simply the power of 10, which is the same number when 10 is multiplied by 10 that many times. So 10 multiplied by 10, 0.3 times gives 2. So 10 raised to the power 0.3 is equal to 2. Okay. So log 2 to the base 10 is 0.3. समझ में आ गया 0.3 क्या है? 0.3 is the power of 10 which gives 2.
ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये दिल को तसल्ली देने के लिए, यार हमने ये मैनेजेबल बनाने के लिए किया है। सच्चाई ये है कि हमने इसको कंफ्यूजिंग बनाने के लिए किया है। The use of log converts the power as multiplication and multiplication to addition. The division is converted to a question of subtraction. Or powers become the multiplication. Under roots become division. तो logarithm से calculation comparatively easy हो जाता है, और उस समय calculators थे नहीं, तो इसलिए log were used. Now, ionic product of water is extremely small quantity. Concentration of ions in pure water are also very low. बता ही दिया 10 to the minus 7, 10 to the minus 7 है. The concentration of these ions change exponentially with each drop of reactant. अगर हम इसको प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो ये कंसेंट्रेशन, एक एक ड्रॉप का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अभी बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। सो log kw इज इक्वल टू log h प्लस कंसेंट्रेशन प्लस log oh माइनस कंसेंट्रेशन। ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। टू मेक इट पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय -1। क्लियर? All these log values in the concentration are powers of concentration. By multiplying by -1, we have made this power of concentration positive. So the negative log of Kw is the positive power of Kw. ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये सिर्फ लिख के बता रहा हूं. The negative log of concentration of hydronium ion gives the positive power of hydronium ion concentration. Negative log of concentration of hydroxide ion gives the positive power of hydroxide ion concentration. And this symbol depicting the entire process, देखिए the positive power is P. अब ये P जो है ना, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. अब ये जो P है ना, दिस मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ वॉट एवर फॉलोज इन द फॉर्मूला. हमारे पास PH हो सकता है, POH हो सकता है, P एनीथिंग हो सकता है, PKW हो सकता है, PKA हो सकता है, PKB हो सकता है, PKH हो सकता है. बट एक बात का ध्यान रखना, P is used only for numbers the value of which is between 0 and 1. ठीक है? KW की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो हमने PKW यूज कर लिया. OH माइनस कंसेंट्रेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो हमने POH यूज कर लिया, PH यूज कर लिया. ठीक है? सो दैट द वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है? अब ये जर्मन वर्ड ले लीजिए, पावर, पोटेंस, दैट्स अ जर्मन वर्ड. फ्रेंच में भी है, पोवायर एज द पावर. पता नहीं पावर हमेशा पी से शुरू हो रहा है, हिंदी में अलग है, बट इनमें तो ये शुरू हो रहा है पी से. ठीक है? इट इज नॉट टू यूज द क्वांटिटीज विच आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड और कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी केस विद पॉजिटिव पावर ऑफ 10. तो ये पॉजिटिव पावर ऑफ 10 के लिए यूज नहीं हो सकता. सो आई वोंट टेल यू, ये मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया है. ये स्टेटमेंट्स है जो अक्सर टीचर यूज करते हैं. द स्क्वायर ब्रैकेट्स डिपिक्टिंग द कंसंट्रेशन आर omitted. The charge signifying or identifying the ions are omitted. So it becomes pKw, pH plus POH. And just writing it, it becomes pH. pKw is equal to pH plus POH. कोई दिक्कत? This is the famous equation that we all know. I believe आपको भी पता है. pH is the negative log of hydronium ion concentration in the solution. ठीक है? And POH is the negative log of hydroxide ion concentration. अब Kw की वैल्यू 10 to minus 14 है, 298 केल्विन. तो Kw is 298 केल्विन, 10 to minus 14 है, 29 केल्विन. Pkw की वैल्यू 14 हो जाएगी. कोई कंफ्यूजन? तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू चेंज द टेम्परेचर, दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज.
For any fixed temperature pKfW, that is the sum of pH and pOH is a constant, but individual values of pH and pOH may be different as per the system. ठीक है? pH is equal to pOH only for pure water. And when pure water is called, it is called neutral solution. ठीक है? हर जगह pH is not equal to pOH. हाँ भाई, किसी ने कुछ पूछना है? No, sir, it's clear. Okay, let's talk about the acidic and basic solutions. अब H plus is equal to OH minus है. If H plus is equal to OH minus, pH is equal to pOH. And such a solution is termed as a neutral solution. ये note कर लो. For a neutral solution, H plus and OH minus are equal. pH is equal to pOH. Notice, sir. नोट कर लिया ना? चलो बढ़िया. Now talking about the next thing. For pure water, the concentration of hydronium and hydroxide will always be equal. ये फिर से नोट कर लो, वरना फिर तुम आगे जाके गलती करने वाले हो. ठीक है? कर लो जल्दी से इसे. For pure water, the concentration of hydronium and hydroxide ion will always be equal. भाई जितने लोग यहाँ पर YouTube के ऊपर हैं, एक बार हेलो तो लिख दो, पता तो चल जाए कौन कौन है. अक्षय है, राधिका है, मायुक है, और इन तीन के अलावा मुझे बाकी तीन नजर नहीं आ रहे हैं. कौन कौन है? ठीक है? For pure water, the concentration of hydronium and hydroxide ion will always be equal. So we can simply say Notice, sir. pure water is always neutral. Pure water is always neutral. Okay. Now at 298 Kelvin, the neutral pH is 7. Please remember, at 298 Kelvin, the neutral pH is 7. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे, ये न्यूट्रल पीएच बदलता चला जाएगा. At let's say near about 27273 Kelvin, this neutral pH actually becomes 8. 8 भी नहीं, 9. At 90 degrees Celsius, it becomes near about 6. Is this clear? Now, if H plus concentration is greater than OH minus concentration, somehow, किसी भी वजह से, then pH is less than pOH. Remember, pH is negative log. तो एक वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका नेगेटिव लॉग उतना ही छोटा होगा. So whatever is the order of H plus and OH minus concentration, pH and pOH order would be opposite of it. Clear? If H plus concentration is more, pH will be less than pOH. ठीक है जी? Then it will be considered acidic solution. If pH is less than pOH, it is acidic solution. Concentration of H plus is greater than OH minus, it's going to be acidic solution. If H plus is less than OH minus, then pH will be greater than pOH, and that will be a basic solution. Okay,
alkaline, basic, whatever you used to call it. चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़िए and give me the solution of this question. Solve this question जल्दी से. अक्षय, मायूक, राधिका, अनन्या, प्रियांशु, तीर्थराज. भाई जो अपना नाम नहीं बताना चाहते वो भी बता दो, जिससे मैं आपको भी नाम से कह सकूं कि भाई काम कर लो. और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग और सेशन, उसके लिए आपको पहले अपने आप को सब्सक्राइब करना होगा. सब्सक्राइबर उसके लिए 1 मिनट के बाद आप मैसेज कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन सेंड द मैसेजेस. मोर कही वाला, वेलकम बेटा, आप पहली बार आए हैं. ग्रेट. चलो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. Sir, pH will be 6. Perfectly clear. Yes, pH is going to be 6. And further the question is it acidic, basic or neutral? So then neutral solution. Okay. Anybody has any other answer? Priyanshu Ghosh has said it is neutral. सर pH का वैल्यू pH का वैल्यू, pOH pUH आप बताओ. Ananya, what would be the value of pOH according to you? सर इक्वल है pH इज इक्वल टू pOH तो सेम होगा क्या? हाँ बिल्कुल. अभी तो आपने बोला सेम. सेम का मतलब इक्वल ही तो हुआ. क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है, क्वेश्चन सेज इट्स प्योर वाटर. When question says it's pure water, then the concentration of H plus and OH minus are same. pH is equal to pOH. ठीक है. PTKW is pH plus pOH. So PKW is equal to twice of pH. PKW is equal to twice of pH and PKW is 12. 10 to the power minus 12 बोलिए ना value. So pH is equal to 6. Okay. न्यूट्रल. But it is pure water. So pure water is always neutral. और हमने न्यूट्रल मान के ही तो किया है. pH is equal to pOH. रिमेंबर यहां पे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? द टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन, टेम्परेचर इज 363 केल्विन. And since temperature is 363 Kelvin, the neutral pH itself changes. Is that clear? So the neutral pH changes. Pure water is always neutral. ठीक है? Now let's understand Yes, sir. something else. ठीक है? जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखना. कॉपी कुछ करो, कॉपी कुछ और हो जाता है.
अच्छा, अब कुछ और चीज देखो, ठीक है। हमारे पास है इक्वेशन H2O is in equilibrium with H plus plus OH minus. ठीक है? Let us say we have 0.1 molar HCl, 0.1 molar HCl solution. Now, HCl is a strong electrolyte. Okay. Being a strong electrolyte, HCl is going to dissociate completely, and 0.1 molar solution is not a concentrated solution, so it is going to simply dissociate completely into H plus and Cl minus. Now, if it is 0.1 molar, initially this is 0 and 0, this is going to become 0, and this is going to become 0.1, and this is going to become 0.1. So HCl is going to dissociate to form 0.1 molar H plus and 0.1 molar Cl minus. यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत सिंपल सी बात है. Now H2O is going to be dissociated. Let us say it forms X of H plus and X of OH minus. Now the concentration of H plus in the solution will be equal to the concentration of H plus from HCl plus concentration of H plus from water. Now that is going to become equal to concentration of H plus from HCl is 0.1 and concentration of H plus from water is, let us say, X. So this is going to be 0.1 plus X. ठीक है ना? और concentration of OH minus is simply equal to X from water. ठीक है? कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? Okay. Now, what you can understand is, very easily understand is, that by adding H plus HCl, by adding HCl, we increase concentration of H plus. By adding HCl, we increase the concentration of H plus. Okay. H plus is the product in ionization of water. Okay. So effectively, we have added the product. अगर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर, any equilibrium reaction, we add the product, what will happen to the equilibrium? If in any equilibrium reaction we add the product, what will happen to the equilibrium? Sir, backward reaction. Perfect. It is going to be a backward reaction. A backward reaction in this case would be suppression of ionization of water, because forward reaction is ionization of water. So backward reaction would be the combining of water or non-ionization of water. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So reaction will move backward. The reaction will move backward. Now, if the reaction moves backward, it would mean ionization of water will be suppressed. Okay? Ionization of water will be suppressed. It is going to become less. Okay. So I can say HCl suppresses ionization of water as it has one ion common with water.
इस स्टेटमेंट में किसी को प्रॉब्लम? HCl suppresses ionization of water because it has one ion common with water. मोरकही वाला, आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है, सो वी आर डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री, सो इट शुड नॉट रिमेन वीक. आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहिए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक नहीं रहेगा. व्हाई डोंट यू कम इन गूगल मीट? गूगल मीट का लिंक यहां पर दे रखा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड कम इन गूगल मीट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द डेटा. बोलिए. Anybody has any kind of problem in whatever is written on the slide at the moment? Perfectly clear. So it is understood that HCl suppresses the ionization of water due to the presence of a common ion with water. And this is what we term as common ion effect. Common ion effect is suppression of ionization, or you may term it as dissociation of a weak electrolyte by a strong electrolyte which has one ion in common to the weak electro. Now this is what we call as the common ion effect. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, जो अब आगे बहुत बार यूज होगा. Absolutely clear, everybody? Yes, sir. So here we are talking about one common ion effect. HCl is dissociated to give H plus and Cl minus. 0.1 जो है ये 0.1 दे देगा, and concentration of H plus is equal to concentration of HCl. H2O gives H plus and OH minus. ठीक है? HCl increases the concentration of H plus, the product of the equilibrium reaction, and the dissociation of water will decrease. ठीक है? यही बता दिया सबको आपको मैंने, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? The suppression of ionization of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte which has one ion common to the ions produced by dissociation of the weak electrolyte by increasing the concentration of that ion is termed common ion effect. ठीक है? That is the common ion effect.
ठीक है? Anybody has any kind of confusion here? चलिए अब एक बात देखते हैं. Now the concentration of H plus is equal to the concentration of H plus from HCl plus concentration of H plus from water. Now remember, concentration of H plus from water is actually less than 10 raised to power minus 7. If it is pure water, then in that case we have 10 raised to power minus 7, the concentration of H plus from water. अब अगर हमने H plus कहीं से डाल दिया, water का dissociation कम हो गया, then the value is going to become even less than 10 raised to power minus 7. Due to common ion effect. So simple as that, the concentration of H plus from HCl is much, much greater than concentration of H plus from water. Okay? So I can consider that concentration of H plus is equal to actually the concentration of H plus from HCl only. Because the concentration from water is extremely small. Is this clear? So the concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 1, which is nothing but the concentration of HCl. ठीक है? ध्यान रखना, HCl is a strong monobasic acid. HCl is a strong monobasic acid, and that is why the concentration of H plus is equal to the concentration of HCl. ठीक है? Any kind of problems? अब एक सिंपल सी बात है. If I want to find pH is equal to minus log of concentration of H plus. So that will be equal to minus log of 10 raised to power minus 1. That will be equal to minus of minus 1, that is equal to 1. So the pH of 0.1 molar HCl is 1. मुझे पता है मैंने बहुत धीरे धीरे कराया है, बहुत आराम आराम से कराया है, बहुत बोरिंग तरीके से कराया है, बट आई बिलीव कि इतना बोरिंग करवाने के बाद अब आपको समझ में आ गया है. तीर्थराज, प्रियांशु, अक्षय, मायुक, मोरकही, राधिका, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? Clear, sir. No, sir, it's clear. No, sir, clear. ओके, ठीक है. तो यहां पे x को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. x की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है, नियर अबाउट 10 माइनस 13 आएगी. सो यहां पे आ गया pH इज इक्वल टू 1. ठीक है? कैन वी फाइंड द pH ऑफ 0.1 molar NaOH? दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी रिवर्स्ड. ठीक है? हमारे पास है NaOH. Now NaOH is going to dissociate to form Na plus plus OH minus. Now OH minus is the common ion. Water forms H plus and OH minus. So NaOH is going to give you OH minus. So again, NaOH also is going to suppress the ionization of water. So H plus again is going to suppress the ionization of water, and then what we find? हमारे पास है Na plus plus OH minus suppressed हो गया. And then this is 0.1.
अभी तो फिलहाल तो इनिशियली 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 और 0.1 हो जाएगा. Concentration of OH minus will be equal to the concentration of OH minus from NaOH plus concentration of OH minus from water. And as we can very well understand, the concentration of OH minus from NaOH is much, much greater than the concentration of OH minus from water. Okay. So the concentration of OH minus simply becomes equal to the concentration of OH minus from NaOH. Okay. So the concentration of OH minus is equal to 10 raised to power minus 1. अब हम POH निकाल सकते हैं. POH is negative log of concentration of OH minus. That is equal to negative log of minus 1. That is equal to 1. So POH is equal to 1. Now we know pH plus POH is equal to 14. So that simply means pH is equal to 13. किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir, it's clear. No, Priyanshu, sir. is it clear? Mayuk, Akshay, Radhika, Morkahi, absolutely clear? So this is what we have as pH of NaOH. Same way कर सकते हैं हम. बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है और ये हो जाएगा. आंसर: calculate the pH of 0.01 molar HCl. Give me the value. Answer: great. Sir, pH will be 2. Yes, pH will be 2 because 0.01 is again very, very high as compared to the water contribution. Concentration of H plus Sir, from pH H. is 2. Yeah, pH is 2. The concentration of H plus from water can be neglected. Hence, the pH is 2. इस क्वेश्चन को करोगे? भाई देखो, what I am going to do is slowly and slowly I am going to increase the level of questions. वैसे मैं slowly नहीं increase करता. Can you solve this question? Yes, sir, doing.
आंसर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आंसर Sir, pH of solution will be 13. 13. How can it be 13? No, it's not 13. आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा प्रियांशु। ये क्वेश्चन दो स्टेप का है। The first thing you have to find the concentration of the solution, and second thing you have to find the pH. दो स्टेप का है। सबसे पहली बात, हमारे पास 1 मिलीलीटर है 0.1 मोलर. We add 99 milliliter of water. That means total value becomes 100,000 milliliter. Total solution becomes 1000 milliliter. So हमारे पास है M1V1 is equal to M2V2. M1 is 0.1, V1 is 1, M2 we don't know, V2 is 1000. So M2 actually turns out to be 10 raised to power minus 4. Is this clear? So the concentration of sodium hydroxide actually becomes 10 raised to power minus 4. So concentration of OH minus becomes equal to 10 raised to power minus 4 because again that is much greater than the concentration of OH minus given by water. So we neglect the concentration from water. So POH will turn out to be 4, pH will turn out to be. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. So what was the problem in it? And then you would say that ionic equilibrium is difficult.
Is this clear? Yes, sir. Basic. कोई कंफ्यूजन किसी को भी? No, sir. No, sir. Okay, so let's have the next question. बेटा हर क्वेश्चन में ट्रिक है. डोंट टेक दीज क्वेश्चंस लाइटली. देखने में बहुत इजी लगते हैं, ये उतने इजी है नहीं. कैलकुलेशन नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर. किसी भी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है. सो डोंट से दैट यू आर गोइंग टू लूज ऑन मैथमेटिक्स. सर हमसे कैलकुलेशन नहीं होती इसलिए गलत हुआ. कैलकुलेशन है ही नहीं. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. H2SO4 is going to dissociate to give 2H plus. The concentration of H plus is going to be twice of 0.0005, and that's going to be 001. The pH is going to be actually equal to 3. Any confusions here? No, sir. We are going to start today's evening class from this question. Take the screenshot and we are going to solve this question at 4 p.m. Done, sir. Hello. Hello. Done, sir. Which question? The question which I have given you just now? We are going to start from this particular question in the evening class at 4 p.m. Yes, you can try it, Mayuk. Everybody has to try it. Give me the answer in the comment section on the YouTube. Okay? Okay, sir. Okay then. We'll meet at 4 p.m. today. Bye bye. Good day. तब तक पढ़ाई करो और रिवाइज करो. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Yes, Mayuk, you have to try by yourself.